At about 4 weeks, 4 weeks, थर्ड वीक तक हमने ज्यादातर चीजें की है. ज्यादातर इंडिविजुअल ऑर्गन डेवलप होने जाते हैं, चालू होते हैं 4th वीक में. At about the 4th week, a small diverticulum appears. Small diverticulum appears. A small diverticulum appears, as you can see, from the pharyngeal part of foregut or the cranial part of the foregut, and this is called as a respiratory diverticulum. है ना, हम पहले देख चुके हैं ये. And this is going to form esophagus. Then this diverticulum develops into trachea. Normally a septum, यहाँ पे एक septum आता है. An esophageal septum develops to separate the developing trachea from the posteriorly placed foregut. So एक esophageal septum उसको कट करता है, ये इसको कट करता हुआ चला जाता है. पहले तो thoracic part में से diverticulum निकला. Then the diverticulum has to be cut because this will be separately forming the respiratory system. So the respiratory diverticulum needs to be separated from the thoracic part of the esophagus or the cranial part of the foregut. तो इसके लिए एक एक septum निकलता है, and that septum will cut esophageal septum. By this mechanism, the foregut becomes divided into anterior part, which is trachea, and posterior part, which is thoracic part of esophagus. Easy till now. 4 week, diverticulum, septum, anterior respiratory part, posterior foregut part. Derived from the primitive gut. कहाँ से कहाँ तक आता है? That you can understand. So from the respiratory diverticulum to the stomach. With the descent of the heart and lungs, so heart और lung descend करते हैं, it also increases in length, esophagus. At 7th week, started in 4th week, 7th week it reaches its final length. We saw that epithelium is formed by endoderm. The muscular coat is formed by surrounding splanchnopleural mesenchyme, which is the muscular coat which is formed, it is striated in upper 2/3 and smooth in lower 1/3. Please understand, this is very peculiar. हमने देखा है कि generally striated muscle जो होता है voluntary होता है, but इसमें esophagus, although it is a viscera, the upper 2/3 is striated muscle, the lower 1/3 is smooth muscle. Again, I will repeat, the upper 2/3 is derived into striated muscle, the lower 1/3 is forming smooth muscle. और ये दोनों मसल्स कहाँ से आए? सराउंडिंग मेसेनकाइम. सराउंडिंग मेसेनकाइम का मतलब क्या? स्प्लैंक्नोप्लोरिक मेसोडर्म. दिस इज अ डायग्राम शोइंग डाइवर्टिकुलम, और फिर बीच में सेप्टम आया और सेप्टम ने उसको डिवाइड कर दिया, पीछे ईसोफेगस और आगे ट्रैकिया. Stages in development of esophagus, if we see what are the stages in development of esophagus, तो हमने देखा था कि लंबा होता है, it elongates with the descent of the heart and lungs. It elongates during the 2nd month. By the 8th week, the proliferating epithelium has partly occluded the lumen. अभी देखिए जो भी है esophagus से चालू किया अपन ने, बट पहले तो ट्यूब है, ट्यूब में सिलेंडर है और ट्यूब का लाइनिंग सिर्फ एंडोडर्म है, वो एंडोडर्म एपिथेलियम बनाता है. That is the beginning, that is the first point. Then what happens, पूरे का पूरा जो cavity है, that cavity is filled with proliferating epithelium. Are you getting me? एंडोडर्म था, उसने एपिथेलियम बनाया, एपिथेलियम proliferate हुआ, and that proliferation partly blocks the lumen, closes the lumen partly.
So it is formed by the 8th week. The proliferating epithelium has partly occluded the lumen. So elongation यहाँ पे लिखा नहीं है, but proliferation of epithelium, proliferate होकर solid बन गया. सबसे पहले वो सिलेंडर ही था, फिर elongate हुआ, फिर epithelium proliferate हुआ, तो वो almost solid बन गया. अब वापस उसमें recanalization होता है. There is a vacuolization and space formation and recanalization. It occurs during the 3rd month by vacuolation in the multi-layered columnar epithelium. That is called as recanalization. We will see it in diagram. And then there is differentiation of stratified squamous epithelium, which occurs during the 4th month. Differentiation of stratified squamous epithelium. We know the epithelium of esophagus. It is stratified squamous epithelium. कहाँ से आएगा? Normally पहले वो एंडोडर्म था, बाद में उसको ही डिफरेंशिएट होके एपिथेलियम बनाना है, और वो एपिथेलियम बाद में मॉडिफाई होके स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाता है ड्यूरिंग द 4th month. So there is elongation, there is proliferation, then there is recanalization, then there is differentiation of epithelium. Then is muscle, smooth muscle and striated muscle. Induction of the muscle formation in the splanchnopluric mesoderm. It occurs during the 2nd month in response to signals from the endoderm. अब एंडोडर्म ने सिग्नल डाला तो सराउंडिंग जो ट्यूब है उसके अंदर सराउंडिंग में जो स्प्लैंक्नोप्लरिक मेसोडर्म है वो इंड्यूस हो गया, और इंड्यूस होके उसने स्मूथ मसल बनाना चालू कर दिया. इनिशियली सिर्फ स्मूथ मसल बनता है. हमने पहले कहानी सुनी कि वो अपर 2/3 is this and lower 1/3 is this and that, but initially all is only smooth muscle. And then there is something which is called as transdifferentiation. Transdifferentiation of smooth to skeletal muscle occurs in upper 2/3 of the esophagus. Transdifferentiation is direct transformation of one differentiated cell type to another. That is how we see that the upper 2/3 becomes skeletal muscle. So पहले पूरे का पूरा जो बनता है स्मूथ मसल ही होता है, फिर upper 2/3 because of its requirement is converted into skeletal muscle or striated muscle, and that is called as transdifferentiation. So these are the steps which occur: elongation, proliferation, recanalization, differentiation, induction, and transdifferentiation. Okay, so now I will stop here. This we saw that these are the stages in development of esophagus. बाकी esophagus खत्म नहीं हुआ है. अभी you need to add the applied anatomy, because without that the development of GIT will have plentiful abnormalities, and that we need to keep. Development of GIT will have plentiful abnormalities, and those abnormalities needs to be seen. कब होती है, कैसे होती है? So if I quickly revise, हमने जो बात किया है आज वो we talked about the development of GIT, foregut, midgut, hindgut, yolk sac, endoderm, involvement of surrounding mesoderm, also surrounding neural crest cell derivative, which is going to form ganglia, and then at 4 weeks respiratory diverticulum, trachea, septum सेपरेट किया उसने सेप्टम ने, और इसके कारण एंटीरियर पार्ट रेस्पिरेटरी बन गया, पोस्टीरियर पार्ट जीआईटी का बन गया, एंटीरियर पार्ट ट्रैकिया बन गया, पोस्टीरियर पार्ट इसोफेगस बन गया. कहाँ से कहाँ होता है, कौन से वीक में होता है? सिर्फ एपिथेलियम नहीं पर मसल भी है, स्ट्राइटेड है अपर 2/3 में, लोअर 1/3 में स्मूथ है. इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू लेयर भी है, ब्लड वेसल्स भी है, जो अपन ने बात किया. स्टेजेस क्या होते हैं?
पहले इलोंगेट होता है, कोई भी ऑर्गन के इलोंगेट होने के चांसेस होते हैं, फिर प्रोलिफरेट होता है एपिथेलियम, फिर रिकैनलाइजेशन होता है, फिर से ट्यूब बन जाती है, फिर से कैविटी बनती है, फिर differentiation of stratified squamous epithelium occurs during the 4th month, and then induction of muscle, initially only smooth muscle, and then transdifferentiation of smooth muscle to skeletal muscle happens in upper two-thirds of esophagus. Next time we will see applied and what else needs to be written about this. Okay, any question? Any question? Now please listen. Let me tell you. आज मैंने आपको पिछली बार भी ब्रेकआउट रूम एक्टिविटी नहीं दिया था. नेक्स्ट टाइम आई विल गिव. जो पढ़ाया है उसमें से आप पढ़ के आना. आई विल गिव यू ब्रेकआउट रूम एक्टिविटी and then we will take up certain responses which come out of this activity. Any question? Okay, fine. If there are none, then you can enter the attendance.